Good morning, everybody. Today, I would like to welcome you for this lecture of our subject Basic Civil Mechanical Engineering 2, that is BME part, Basic Mechanical Engineering part. In last two lectures, we are discussing the introductory part of the syllabus, and in this particular lecture, we are going to continue with that. So in previous lecture, we have seen the content of chapter pump, compressor and turbine, as well as machine tools and joining processes. We have discussed regarding with these two chapters. And today we are going to concentrate on power transmission system as well as the very important chapter thermodynamics. So in last lecture, what are the pump, what are the compressors and what are the turbines? In which category we will have to count pump, compressor and turbine? Which types of the pump, compressor and turbine we will have to study? That all part we have discussed in chapter 1. In chapter 2, we have discussed two machine tools. Number 1, center lathe. Number 2, our drilling machine, pillar type drilling machine. And in joining process, we have just taken a look of number 1, welding process, and number 2, brazing and soldering. Okay, what are these particular techniques we are going to see in detail when we will study this particular chapter. Now we are in the introductory part of our syllabus. Then today we will move towards our next chapter, that is power transmission system. Now let us move towards this power transmission system. So here the syllabus of this power transmission system is in front of you, and we will have to just take a look of what is the weightage of this particular chapter. पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 7 है, उसको वेटेज कितना है? उसे 12 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है, and that is very much important, because if you will take a look, you will come to know that only that pump, compressor, turbine is having weightage of 11 marks, sorry, and remaining chapters are having weightage of 12 marks. Means almost each and every chapter is having same weightage. And here also in power transmission system, we are going to study some of the fundamental concepts of the power transmission system. Now, first of all, let us understand what is power transmission system. ये power transmission system क्या है? You know that you need to transfer the power to run a particular machine. हमें power transfer करने की जरूरत पड़ती है. You can take any kind of the example. For example, we will take a very famous example, or you are familiar with, that is nothing but your day-to-day life example. It is of the game. हम एक क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्रिकेट में आप जब बॉलिंग करते हो तो बॉल के पीछे आप अपना स्किल और स्ट्रेंथ दोनों लगाते हो. Means you are providing your muscular power, muscle power to that particular ball, and accordingly the ball will go with a certain velocity towards the batsman. Then second thing, if you want to hit that particular ball,
then also you will have to take that bat into your hand and you will have to transfer your power on the ball. Then and then only it is possible that ball will move with some more velocity towards the boundary line. Means, if you want to perform any kind of the work, power is definitely required, but at the same time, transmission or transformation of that particular power is also very much important. And that's why, as far as this basic mechanical engineering is concerned, machines are going to be concerned. We will have to take care of that with the help of the different drives. We are transferring that power from one point to another point. एक जगह से दूसरी जगह हम जो कुछ पावर है वो पावर ड्राइव के यूज से ट्रांसफर करते हैं. And the drives are playing very important role. In our day-to-day life, we have seen n number of times that with the help of that drive, we are transferring the power from one point to another point. Now, first this chapter, it is starting with the belt drive. And here in this belt drive, we will have to see the two main fundamental types of the belt drive, that is open and cross belt drive. I want to tell you that why these drives are known as belt drives. हम इस ड्राइव को बेल्ट ड्राइव क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, that particular part we need to study and we need to concentrate. So if I have shown two pictures here, you can also see. So in first picture, there is a motor, and to this particular motor, at the center of this motor, there is a shaft, and around that particular shaft, we have attached one green color pulley. It is called as a pulley. Pulley you have seen at many times. Pulley is nothing but a small wheel with the help of which the motion we are making very simple. पुली यानी एक व्हील होता है जिसके यूज से हम अपना जो काम है उसमें जो एफर्ट्स लगते हैं वो एफर्ट्स रिड्यूस कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि अगर बहुत सी जगह जहां कुआं होता है उस कुएं पे ऐसा व्हील जो रहता है वो व्हील लगाया हुआ रहता है और उस पे हम रोप डाल के नीचे बकेट वगैरह लगा के हम कुएं से पानी निकालते हैं. So to reduce your efforts to perform the work, this particular wheels are utilized. So same kind of the pulley is attached to the shaft of this particular motor. Here, this is the white color shaft. You can see. I am marking on it with the red pen. This is the shaft. Around that particular shaft, pulley is attached. उसके अराउंड में पुली अटैच की है, फिक्स की है, एंड अ स्मॉल रोप, स्मॉल बेल्ट, इट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ दिस ये लागले तर पप्पा हो नाही गावात. हेलो, हु इज देयर? प्लीज अनम्यूट म्यूट योरसेल्फ. सो दिस पर्टिकुलर बेल्ट वी हैव पुट हियर. And this belt, the same belt we are attaching towards another pulley which is large in size and pink in color. Here I have shown. So this particular first pulley is known as a driving pulley. Driving means वो motion देती है पुली के लिए, इसलिए उसको driving pulley कहते हैं. And this is second one is the driven pulley. Second one is driven pulley. Driven pulley means what? With the help of the motion given to the driver pulley, that particular motion, that particular that power is
transform or it is transmitted towards the driven pulley with the help of this belt. बेल्ट का यूज करके इस ड्राइविंग पुली का जो मोशन है, जो पावर है, हम क्या करते हैं, इस ड्रिवन पुली तक ट्रांसफर करते हैं. और क्या होता है, एज वी स्टार्ट रोटेटिंग दिस पर्टिकुलर ड्रिवन पुली, द मोशन, द पावर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बेल्ट टू द ड्रिवन पुली, और ये जो ड्रिवन पुली है वो भी रोटेट होने लगती है, घूमने लगती है. And automatically, as this driven pulley is start rotating, the shaft around which the driven pulley is attached is also start rotating. यानी कि पहले ड्रिवन शाफ्ट को मोशन दिया है, लेकिन ड्रिवन शाफ्ट का मोशन ट्रांसफर करने के लिए हम जब बेल्ट यूज करते हैं तो उसे उसे कहते हैं बेल्ट ड्राइव. एक जगह से दूसरी जगह पुली का यूज करके हम जब मोशन ट्रांसफर करते हैं तो उस मोशन ट्रांसफर में अगर हम बेल्ट यूज करते हैं तो उसे कहते हैं बेल्ट ड्राइव. नाउ व्हाट इज द ओपन बेल्ट ड्राइव एंड व्हाट इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव? द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर is related with the open and cross belt drive. Open and cross belt drive means जब इस बेल्ट में हम एक ट्विस्ट लगा के उसको फिक्स करते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव. और कोई भी ट्विस्ट अगर इस बेल्ट में हम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव. टाइम बीइंग यू जस्ट कीप ओनली दिस डिफरेंस इन योर माइंड. अभी तक के लिए बस इतना ही डिफरेंस अपने मन में आप फिक्स कर दो कि ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट में कहीं भी क्रॉस नहीं होता है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट में वो क्रॉस आ जाता है. यहां वो क्रॉस है, आप देख सकते हैं. इसलिए द फर्स्ट बेल्ट ड्राइव, फर्स्ट फोटोग्राफ वॉट एवर आई हैव शोन, it is open belt drive, and the second belt drive is nothing but your cross belt drive. Understand? Time being, with the help of this picture, you just try to fix the difference between open belt drive and cross belt drive in your mind. Okay. Now, second bit we are going to study under this main bit of belt drive is मटेरियल ऑफ बेल्ट. इस बेल्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? बिकॉज इन इंजीनियरिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ योर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज गोइंग टू बी रॉन्ग, देन डेफिनेटली your mechanism or your machine will not perform as per your requirement. And you know that some of the special metals are there, and that particular special metals and materials are playing very important role as far as your machine part is concerned. Understand? अब एक छोटा सा मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं why material selection is important. आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों का जो बाइसिकल होता है, वो बाइसिकल मोस्ट ऑफ द टाइम फाइबर का या प्लास्टिक पाइप का बनाया जाता है. लेकिन जब हम बड़े होते हैं और हम बाइसिकल परचेस करते हैं तो दैट बाइसिकल इट इज मेड अप ऑफ द कास्ट आयरन. व्हाई दैट बेसिक डिफरेंस इज देयर? सिंपल बात है कि जब हम बड़े होते हैं तो अपना जो वेट है वो वेट बढ़ जाता है. वेट बढ़ जाता है, इसकी वजह से बाइसिकल के स्ट्रक्चर पे आने वाला जो स्ट्रेस है, जो लोड है, वो लोड बढ़ जाता है. और अगर हमने वहां भी प्लास्टिक यूज किया तो देयर मे बी चांसेस दैट दैट प्लास्टिक विल नॉट सस्टेन द लोड ऑफ द बाइसिकल राइडर. जो साइकिल पे हम बैठने वाले हैं, हमारा लोड वो प्लास्टिक सस्टेन नहीं कर सकेगा शायद. इसलिए टू मेक दैट बाइसिकल स्ट्रॉन्ग,
to make that bicycle rigid, the metal in the bicycle for the elder people, it is changed from plastic to cast iron. The simple thing is there. Material selection is very important criteria, and in belt drive that is going to play very important role. Then the next bit is types of the belt. मटेरियल तो हमने देख लिए, लेकिन बेल्ट के डिफरेंट टाइप्स है. अगर आपने बेल्ट देखे होंगे मशीन पे या मशीन पार्ट पे बैठे हुए, तो आपको पता चला होगा कि कुछ बेल्ट जो होते हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ऐसे होता है, यानी कि फ्लैट. कुछ बेल्ट होते हैं उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो ये ऐसे वी शेप का होता है. कुछ जो बेल्ट होते हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ऐसे सर्कुलर होता है. ओके, सो different types of the belts are there as per its cross section, as per its material. We are going to see in detail in this particular chapter. Then there are some of the important mathematical derivation as far as these belt drives are concerned. वो derivation क्या है? The derivations are length of belt for open and cross drive, velocity ratio of simple and compound belt drive, centrifugal tension in the belt drive, and maximum power transmitted. So this length of belt, number one, velocity ratio, centrifugal tension and maximum power transmitted के लिए we will have to study some derivations. And definitely when we are discussing the derivations, definitely some of the formulas we are going to derive through that derivations, and with the help of that particular formulas we are going to solve some of the simple numerical based on the concept of simple belt drive. Understand? So this particular bit is containing some definitions, some properties and some derivations. इस बेल्ट ड्राइव में क्या है? कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ डेरिवेशंस हैं. We will have to study this belt drive in 3 stages: definition, properties and its derivation. And with the help of that particular derivation we are going to study, with the help of that derivation we are going to solve some of the numericals based on this simple belt drive concept. Okay, now the second particular bit in this chapter is other transmission systems. So these are the other transmission system. बेल्ट ड्राइव के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम कौन से हैं? मैकेनिज्म इज सेम बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. देन वी आर गोइंग टू सी द चेन ड्राइव. व्हाट डू यू मीन बाय चेन ड्राइव? यू हैव ऑलरेडी डील विद द मशीन विच इज इंक्लूडिंग चेन ड्राइव सिस्टम. आपने बाइसिकल चलाई है, यहां मैंने जो फर्स्ट फिगर दिखाई है इट इज of the chain drive, और बाइसिकल में एक सिंपल मैकेनिज्म है. एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन चेन ड्राइव एंड बेल्ट ड्राइव? जस्ट कॉन्सेंट्रेट, यू विल कम टू नो दैट. नंबर वन, यहां बेल्ट के बजाय यहां चेन यूज किया है. यू कैन सी दिस रोलर चेन, योर नेम इज प्रोवाइडेड एंड चेन इज प्रोवाइडेड. एंड वो चेन जिसके अराउंड घूमती है वो है स्प्रॉकेट्स. उसे क्या कहा है? स्प्रॉकेट्स. बेल्ट ड्राइव में क्या था? पुलीज. और चेन ड्राइव में क्या है? स्प्रॉकेट्स. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस स्प्रॉकेट्स एंड पुली? यू कैन सी हियर सम ऑफ द टीथ्स आर अवेलेबल ऑन आउटर पेरिफेरी ऑफ योर व्हील. यानी कि
व्हील के आउटर सर्कल पे जब टिप्स रहते हैं, जब उस पे दांत लगे हुए रहते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्प्रॉकेट। और अगर वहां एक स्लॉट बना के रोप या बेल्ट लगाने के लिए एडजस्टमेंट किया हुआ रहता है, तो हम उसे कहते हैं पुली। तो हियर there is a sprocket, and at another end there is another small sprocket. We have seen that in this particular structure, the first sprocket, and here some hole is provided. Here you know that there is a paddle at one end here and at another end here. So when we are going to rotate this paddle with the help of our leg, this sprocket is start moving in this direction, means in anti-clockwise direction. And the same movement is provided towards this type B small sprocket. And you know that around this particular shaft, we are attaching our rear wheel. बैक साइड का व्हील जो होता है वो इस बी स्प्रॉकेट के शाफ्ट को अटैच रहता है। जैसे ही बी स्प्रॉकेट घूमना स्टार्ट हो जाता है, द शाफ्ट इज गोइंग टू स्टार्ट रोटेटिंग, एंड ऑटोमेटिकली द व्हील which is fixed around this particular shaft is also start rotating in the same direction of this first sprocket. तो मोटरसाइकिल, बाइसिकल, इसमें हमने ये मैकेनिज्म देखा है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज अबाउट द गियर। ओके, नेक्स्ट सिस्टम इज अबाउट द गियर। व्हाट डू यू मीन बाय गियर? गियर इज अ somewhat different kind of the structure. Here you can see the gear. आपने गियर देखे होंगे जो हम टू व्हीलर में लेग के यूज से या हैंड के यूज से डालते हैं, दैट गियर इज डिफरेंट, बट एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द गियर इट इज शोन इन दिस पर्टिकुलर फिगर। गियर यानी कि सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा slight difference hai between sprocket and gear. Okay, so gear already you have seen, and in that gear at the outer periphery there are number of teeths are attached, and here we are not going to use any kind of the belt or any kind of the chain or any kind of the rope to move टू गियर्स। यानी कि हम ये जो दो गियर्स हैं वो मूव करने के लिए कोई भी बेल्ट या चेन का सहारा नहीं लेते हैं। हाउ वी आर जस्ट दैट ट्रांसमिटिंग दिस पर्टिकुलर पावर फ्रॉम वन गियर टू अनदर, वी आर डायरेक्टली एंगेजिंग टिप्स ऑफ द गियर विथ ईच अदर। आपने अगर यहां देखा होगा तो दिस वन नंबर गियर and this second number gear are engaged with each other. You can see here. Then this second number gear and this third number gear, they are also attached to each other. They are also engaged with each other. And here directly teeths are combining. Directly the teeths are transmitting that particular power from one gear to another gear. Here in this second gear type, we have not used any kind of the belt, any kind of the rope or any kind of the chain in the system. हमने यहाँ बेल्ट, चेन या कोई रोप का सहारा लेके पावर ट्रांसमिशन नहीं किया है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेल्ट चेन एंड गियर ड्राइव। बेल्ट चेन ड्राइव में हम बेल्ट या चेन पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, लेकिन इन दिस गियर ड्राइव वी आर नॉट यूजिंग सच काइंड ऑफ द एनी मीडियम टू ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर पावर। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ द गियर।
जहां excluding gear terminology we are just going to see the types of gear, means there is no any definitions related with the gear terminology. गियर के किस पार्ट को क्या कहते हैं ये पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. ओनली टाइप्स ऑफ द गियर्स यू विल हैव टू सी. देन गियर ट्रेन्स. गियर ट्रेन्स मीन्स व्हाट? व्हेन n number of gears are attached with each other, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These kind of the gears we are bringing and we are attaching to each other for the power transmission system, then that particular structure is known as a gear train. जब हम दो या दो से ज्यादा गियर एक साथ लाके उसको एंगेज करते हैं और उसका यूज करके पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम गियर ट्रेन कहते हैं. And in that gear train, we will have to study simple and compound gear train. Simple and compound gear train हमें पहले फेज में यहां देखना है. And in second phase, we are going to concentrate on epicyclic gear train. We are going to concentrate on epicyclic gear train. Epicyclic gear train, that is a different kind of the gear train, which is not at all like a simple or compound. It is altogether different. And what is that epicyclic gear train? We are going to study in this particular chapter. Okay, so in this power transmission system, we will have to concentrate, number one, first of all, belt drive, and then second is the chain drive, and third, it is nothing but the gear drive. Understand? So now after studying all such kind of the bits in this particular chapter, we are going to move towards the next chapter, and that is our last chapter of the basic mechanical engineering, and it is nothing but the thermodynamics. I think you will be more happy to know about this thermodynamics, because whatever part you have already studied in your 11th 12th standard, the same particular part you are going to study in this thermodynamics part. Thermodynamics is very much important because in a many process, in a different process, we are going to generate the power to run the equipment. We are going to generate the energy to run any kind of the machine or any kind of the system. So the important thing is, when you are going to generate the energy, or if any work is going to be happen in the system, then in that particular process some heat will be transferred, maybe to the system or from the system to the surrounding or from the surrounding. So that particular study is very much essential, is very much necessary. Thermodynamics is the fundamental part, or we can say that it is nothing but the basic science behind the engineering, behind the heat, work, and many forms of the heat, many forms of the energy. If you want to study such all things, you must know about the thermodynamics. आपको अगर एनर्जी के बारे में जानना है, हीट ट्रांसफर के बारे में जानना है, अगर आपको इक्विलिब्रियम के बारे में जानना है, अगर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थर्मोडायनामिक्स के लॉज के बारे में जानना है, then it is very much necessary to understand the concepts of this particular thermodynamics chapters. And already you have studied those concepts and definition in a 12th standard, but in a real sense you are going to study those all points, those all
definitions and concepts in this particular chapter. Actually, this chapter is having more weightage, not 11, not 12. This particular chapter is having weightage of 13 marks. As far as weightage point of view and as far as further study point of view, this subject is very much important, because thermodynamics is only one chapter. As far as first year basic mechanical engineering subject is concerned, but if you will take a look of the further syllabus, you will come to know that for the mechanical guys, for the mechanical student, this particular thermodynamics is not going to be only one chapter. It is going to be get converted into a special subject when you will move towards second year or third year or the final year. ये जो थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है, यह अभी फर्स्ट ईयर के आपके सेमेस्टर के लिए एक चैप्टर है, बट व्हेन मैकेनिकल स्टूडेंट विल मूव towards second year or third year, there will be a special subject that is applied thermodynamics, and you are going to study very in depth what is the thermodynamics. In next year you will have to study heat and mass transfer, then refrigeration and air conditioning. So to study all those particular subjects, the basics or the fundamental of that particular subject, its study is very much important, and that is nothing but study of this thermodynamics. So friends, what is that thermodynamics? Which points we are going to study, how it is easy, we are going to see in a next lecture. So once again, I extend my gratitude. Thank you very much for attending this lecture. All the best and have a nice day to you. Thank you very much. Thank you. Bye.